says hexadecimal is used for HTML color codes, and HTML color code is this: each pair of digits is stored as binary in an 8-digit bit register. Give the 8-bit binary value that would be stored for each pair of hexadecimal digits. अब इसके 2f है, ये 15 है, ये d 15 है, ये d6 है. अब इसको हमने किस तरह से करना है, हम इनको एज अ निबल लेते हैं. वन निबल विल डिवाइडेड, दिस विल बी 2, दिस विल बी f. हम इस तरह से इसको डिवाइड कर रहे होंगे. इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर ऊपर प्लेसेस लिखने लगे हैं. 1 2 4 8 1 2 4 8 and we have to keep them same for the rest of it as well. For the downwards, for first number is 2, तो हम इसके लिए 2 को करेंगे 2 and the rest will be zeros. f, let me just write a b. जब भी हमारे पास आए सवाल हेक्साडेसिमल का, make sure you write these on some corner. Working space में लिख लेना, but right now I'm just writing it over here. So we have f is 15. 15 means all of them covers up because 8 plus 4 is 12, 12 plus 2 is 14, and 14 plus 1 is 15. Now we have 1 5, not 15, we have 1 and we have 5. So 1 will be, this place is 1 and the rest will be zeros, and then we have to cover 5, so it will be 4 plus 1 5 and rest will be zeros. For d6, d is 13, so 13 will be 8 plus 2 plus 1. Then no, that's 11, so that does not seem to be the answer. 8 plus 4 will be 12 and 12 plus 1 is 13. Now it makes sense. Now 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 plus 2 will be sufficient, and then 0 and 0. This is how this question will be answered. B part says HTML color codes and MAC addresses are two examples of where hexadecimal is used. Give two other examples where hexadecimal can be used. Yes, we can give. We can give that it can be used in IP addresses, but IP addresses also use them. Or you can also write assembly language. Assembly language also uses hexadecimal. Along with that, you can talk about memory dumps or memory locations. Anything would do. Question number 5 says two of the registers store the values this and this. Give the hexadecimal seed number that would be displayed on the screen for each of these binary values. अब इन सब बाइनरी वैल्यूज के लिए हम लोग क्या लिख रहे होंगे, इनके कन्वर्जन है. अब हम लोगों के पास सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन 4 पहले राइट साइड से शुरू करके 4 के हम ग्रुप्स बनाएंगे, और अगर 4 ग्रुप्स नहीं होंगे तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देंगे, बट वी लकली हैव 4 spaces. So let me write it down again with a space. 0 1 0 0 0 0 0 0 and 1 1 0 1. So अगर हम लोग इसको काउंट करें, that's 1 2 4 8, तो ये हमारे पास 4 बन गया, that's a 0. And if we write 1 2 4 8 over here as well, it's 8 plus 4, that's 12. 12 plus 1 is 13. 13 हमें नहीं पता 13 क्या है, हमें बेशक जहन में आ गया हो कि आंसर क्या है, but we are still going to write it down, all the values. So that's 10 11 12 13 14 and 15. So D is 13, so it should be 40D. Similarly, for this one, we're going to make 4 groups of each. We have 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0. So what we are going to do is, this is going to be 0 1 2 4 8, 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7, and in this one we have 8 plus 4, that is 12, 12 plus 2 is 14, 14 is E, so we are going to write 07E. That will be the answer for this question. Okay, for this question, each seat on a flight is uniquely identified on an LCD above the seat. For example, seat 035C is shown as this. The first 3 characters are digits that represent the row. जो first 3 characters हैं, ये row number बताते हैं. 35 row number है. The 4 character is the seat position in the row. तो यहाँ पर A से F तक उन्होंने कोई एक digit है, letter है, वो लगाया हुआ है, जो कि एक hexadecimal value है. So each of the 4 display characters can be stored in a bit register. For example, 0 and C will be represented as 000 1100.
should the 4-bit register would store the remaining two characters 3 and 5. That basically means कि वो हमें कह रहे हैं कि आप इसको hexadecimal में convert करो without saying it directly. So 3 will be 1 and 2 0 0 and 5 will be 0 1 0 1. B will stays identify with seat is stored. बस इसके अंदर हमने क्या करना है, अब ये उन्होंने इनडायरेक्ट वे में हमें कहा है कि हेक्साडेसिमल को आप टेनरी में कन्वर्ट करो या फिर, और जो लास्ट सीट होगी उसको हेक्साडेसिमल में ही रखना है, बाकी सारे जो हैं ये हमारे डेनरी में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, आंसर ही डेनरी में आ रहे होंगे, यानी हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही होंगी। सॉरी, उनका कहने का मकसद है बाइनरीज आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो ये सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। 8 + 1 is 9. Oh, there is no 8. कुछ खराब हो रहा है आज। Okay, there is no 8, there is only 1, so 1 will be there. 8 + 1 is 9, 1 as it is, so that's a 4. 1 + 1 + 1, 8 + 4 + 2, that's I don't know, I won't say the answer before writing this down because this is very important to write so that I do not make any mistake. Right, so 8 + 4 + 2 is 14 and 14 is E, so I will write E here. Question number 2 says, convert the following hexadecimal number into a 12-bit binary. So 12-bit binary, that means I have to cut this off. अब हम इसको 1 2 4 8 8 4 2 1 and 8 4 2 1 के अंदर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू इज 4, 4 हमारे पास है एज इट इज, हम उधर लगा देंगे। ए हमारे पास 10 है, अभी हमने देखा, तो 8 + 2 10 हो गया। एंड देन लास्ट इज एफ, एफ इज 15, so 15 means all of ones, so that's how we will represent it. B part says the 2016 Olympic Games will be held in Rio de Janeiro. A timer that counts down to the opening of the game is shown on a microprocessor controlled display. The number of hours, minutes, and seconds until the games open are held in a three 8-bit registers. The present value registers are 105 hours, then it's 32 minutes, and 20 seconds. ओके, उसने हमें ये प्रेजेंट रजिस्टर वैल्यूज दी हैं और उसने कहा टाइमर जो है अब वो कट डाउन करेगा सेकंड्स में, और उसने कहा 30 सेकंड्स जो है वो कट डाउन हो गया। तो अगर हमने 30 सेकंड्स बाद की इसकी दिखानी है, 30 सेकंड्स के बाद क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली 31 मिनट्स, 105 आवर्स तो एज इट इज रहेंगे। सो 105 आवर्स we can keep the same values, so the values will be 0110 1001, and for the minutes it's going to be become 31 minutes, and we will have all the values as it is, just the it will be 0 0 0 1 1 1 1. Basically it's 1 2 4 8 16 32 64 128. So if it was a 32 initially, 32 minutes थे, तो यहाँ पे सिर्फ एक 1 था। अब क्योंकि 32 रिमूव हो गया तो इन सबको ऐड करने से 16 + 8 + 4 + 2 + 1 will give us 31. That's why I was just quick to judge it, so I wrote it and now I'm explaining it. And for the seconds we are going to give 30, 20 के बाद हमारे पास plus 30 50 seconds हो जाएंगे. So it will be 1 2 4 8 16 32 64 128. 128 से छोटा ही है, 64 से छोटा है, 32 पर एक 1 आएगा, ठीक है, and then we'll have 32 plus 16, 8 हम ऐड करेंगे नहीं बनेगा, you just need to add multiple combinations and then you will see, okay, the answer will be like this. So this makes up 50. 32 plus 16 plus 2 will make 50 seconds. So that's how the B part of B first will be done. The B second says write the hexadecimal value of the minutes register from part B1, and we can already tell, okay, अब हमें मिनट्स बताने हैं रजिस्टर के, पर इन हेक्साडेसिमल वैल्यू वी हैड 31 मिनट्स। 31 को अब हमने हेक्साडेसिमल में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसके नेबल्स को यूज कर सकते हैं।